नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर महिपाल दत्त और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन की नीड्स के बारे में, पर्पसेस के बारे में, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? अगर आपने बहुत डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन दोस्तों दो शब्दों से बना है। लाइब्रेरी के बारे में हम सब जानते हैं। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन इज़ यूज ऑफ मशीन्स। हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का, पर्टिकुलरली कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टू ऑटोमेट आवर हाउस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द लाइब्रेरी। हाउस कीपिंग ऑपरेशंस इंक्लूड सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, serial control, acquisition, etc. To automate these library services, we use the computers and other electronic machinery. This use of machinery is called library automation, computerization, or you may also call it mechanization. So why it is needed? Friends, today, as we know, it is an era of information explosion. Information is generated very fastly and it gets obsolete very fastly at a very enhanced and increased speed. So in addition, the information is also available in various formats like print, non-print, graphical, audio visual, and other various formats. To cope up with this information explosion, we need library services to automate. Likewise, to cope up with the various approaches and needs of the users, we need to automate our library services. उसके अलावा लाइब्रेरी की लिमिटेशंस जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल, टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स फॉर द रूटीन हाउस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द लाइब्रेरी, वी नीड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और हमारे हाउस कीपिंग ऑपरेशंस में डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं। इंफॉर्मेशन के रिट्रीवल को दोबारा से प्राप्त करने को और उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल डेटाबेसेस को सर्च करना है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, या आपके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को, नीड्स को पूरा करने के लिए हमें हाउस कीपिंग, अपनी जो लाइब्रेरी के हाउस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट करना होता है। उसके बाद टू मॉडर्नाइज लाइब्रेरीज, हमारी लाइब्रेरी जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हों, इसके लिए हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन, हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज को ऑटोमेट करना होता है। उसके बाद टू ऑब्टेन इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मीन्स जो आप लाइब्रेरी में जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। टू मैक्सिमाइज द यूजेस, वी नीड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। For the development of new library services, we need library automation. For the storage and very well retrieval, so that we can retrieve the information as and when required by our users, we need library automation. For providing the qualitative library services, speedy and cost effectiveness, less time consuming, and to save the human power, to save the human efforts, we need library automation.
it is very much helpful to automate the library services for the library cooperation and coordination, and to manage the resources of the library, to facilitate wider dissemination of the information, and for the resource sharing and networking we need library automation. So friends, you can very well understand that how much it is required to cope up with the increasing needs of various types of library users. We need to automate our library services. So what are the advantages? क्या फ़ायदे हैं अगर हम लाइब्रेरी सर्विसेज को ऑटोमेट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ईजी से सर्च कर सकते हैं. इट इज़ वेरी टाइम सेविंग बोथ ऑफ द यूजर्स as well as of the library staff, and it fulfills the fourth law of library science. A speedy communication can be done, and it is very much helpful in stock verification. Friends, as we go for the stock verification of a library, it is very tedious in case of physical stock verification of books. But if we have automated our library services and we are using any ILMS, with the help of that ILMS we can do a stock verification very easily. Likewise, all the other housekeeping operations of the library can be done very easily. We can work with all these housekeeping operations in a very helpful manner and very effective and efficient way. It is helpful in resource sharing. As we know that in this time of every library, most of the libraries have budget constraints. No library can itself independently fulfill the needs of the library users nowadays. So we have to share our resources. So library automation is very much helpful in resource sharing. It is very much helpful in motivating the library staff to provide better services to its users. Likewise, for the development of human resource, means our library staff is more advanced and technologically enriched staff with the library automation. But जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हमारे जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. नुकसान क्या हैं? एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इतनी इजीली ऑटोमेट करना बहुत टीडियस काम है. उसके अलावा जैसे मैंने बात की, बजट कॉन्स्टेंट्स बहुत हैं. लाइब्रेरीज़ के क्योंकि एक बेनिफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, तो लाइब्रेरी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी हर लाइब्रेरी सर्विस को ऑटोमेट कर सकें. उसके बाद आपका जो स्टाफ है, सिर्फ लाइब्रेरी सर्विसेज को ऑटोमेट कर देना ही काफ़ी नहीं है. अ कंटिन्यूअस स्टाफ ट्रेनिंग इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कोप अप विद द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़. उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमारी जो ऑटोमेशन सर्विसेज हैं टोटली डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. इफ़ यू डोंट हैव अ बैकअप then you are idle. The maintenance is very costly, and the other one is untrained users and the staff. If the trained users are untrained, then it is very difficult to make them understand. So friends, ये बात हुई हमारी नीड्स की और पर्पजेज़ की. क्या ज़रूरतें हैं, क्या उद्देश्य हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के.
अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। कैसे प्लान करें, प्लानिंग होती क्या है। हम लाइब्रेरी की सर्विसेज को ऑटोमेट करने के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं। तो प्लानिंग दोस्तों एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम सिस्टमेटिकली काम करते हैं। और प्लानिंग के थ्रू हम हमारी लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसका लाइब्रेरी के सिस्टम को समझते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारा लाइब्रेरी का विजन क्या है, नियर फ्यूचर में हम क्या देखना चाहते हैं लाइब्रेरी को। और ये जो लाइब्रेरी है इसका जो विजन है वो हमें क्या कहता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी प्लान है और जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको आप अच्छे से तभी बना पाएंगे अगर आपका लाइब्रेरी का विजन क्लियर होगा। उसके बाद आप जो हैं लाइब्रेरी विजन क्लियर हो, किसने लाइब्रेरी ऑटोमेट की प्लानिंग करनी है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की प्लानिंग करने के लिए जिम्मेवार कौन होता है, लाइब्रेरी अथॉरिटी। मीन्स लाइब्रेरी अथॉरिटी में कौन आएगा आपका, चाहे वो लाइब्रेरी इंचार्ज हैं, चाहे वो आपके प्रिंसिपल हैं, चाहे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपकी वाइस चांसलर हैं, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी है, उसके बाद लाइब्रेरी स्टाफ या लाइब्रेरियन, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं जिनकी आईटी सेक्शन होता है, या कंप्यूटर इंजीनियर जो भी अवेलेबल होते हैं वो आपके प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लाइब्रेरी प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्लानिंग क्या है, सिस्टेमेटिक प्रोसीजर है, आपके स्टेप्स हैं सिस्टेमेटिक। तो हमारी यह सिस्टेमेटिक प्रोसेस है प्लानिंग की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विजन होता है। विजन क्या होता है, विजन एक सपना है आपका, इट इज़ अ ड्रीम, it is a future picture of your library. How and what type of library do you want to see in your near future? It is based on the mission of the library. What is the mission of your library? What type of users do you have? What are the information needs of that users? And what are the trends that are going on in the library services? A vision provides a direction and a philosophy for the library. What is the status of your library? You have to do the system study. You have to assess the library status. What are the needs of the library? What is the nature of your library? What is the purpose? What type of collection do you have? How much collection do you have? What type of users do you have? How many users do you have? What is your daily circulation? And number of multilingual documents, information services, which type of information services you are providing, how many library staff do you have, and what is the working process of library. So what is the present status of your library, you have to keep in mind for that. Now we need data to convert or to automate the library services. For that we have to use various sources of data like the statistics. You must have all the statistics of your library, your staff profile, what type of patrons, what type of users do you have, all the pattern profile should be available for that. Policies should be made, procedures should be made, and functional specifications should be created or should be generated, should be developed in order to plan the library automation. Then what is the requirement gap? Requirement gap is by comparing the actual status, what actual status do your library has, and what are the objectives of your project, the system requirements can be determined.
you can determine the system gap or the requirements, what do you have and what you want to see your library. Then only you can see the what is the gap there, and you have to fulfill that gap. For that you will have to do the feasibility studies. feasibility study क्या है? feasibility studies हैं कि आपका जो प्लानिंग है क्या वो feasible है, क्या वो possible भी है. ऐसा तो नहीं है आप कहीं हवा में ही तीर मार रहे हैं. क्या ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है जो आप प्लान कर रहे हैं? क्या ये ऑपरेशनली पॉसिबल है? क्या ये इकोनॉमिकली पॉसिबल है, फिजिबल है? तो immediately after the analysis and design of the system we have to do a physical study. किस लिए? To answer the questions, is the proposed system possible, is it necessary, whether other options are available, is it affordable, like is it technologically feasible, do you have all the technologies? You should plan how much technology you want to incorporate while planning the library automation. Likewise, is it operationally feasible to automate the library services? Do you have the fund or the budget to automate the library services? So economically, operationally and technologically feasibility study must be entertained. The end product of a feasibility study is a report to the management. After the feasibility study, you have to make a report and that submit to the management. Technological plan is after the it should be a written document. टेक्नोलॉजिकल प्लान क्या होगा? आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप उसका विज़न, लाइब्रेरी क्या, आपके गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस जो आप प्रोजेक्ट की प्लान कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कि आपके जो विज़न है उसको किस तरह से ये कंपोनेंट्स अचीव करेंगे, उसके आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आपका फाइनेंशियल एस्टीमेट कितना है, फाइनेंशियल बजट क्या होगा, आप एक्शन प्लान क्या करेंगे, कैसे कैसे काम करेगा और टाइम टेबल क्या होगा. एक टाइम देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम फॉर द प्रोजेक्ट. तो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो टेक्नोलॉजी प्लान के ऊपर बेस्ड होता है. और टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो फंडिंग एजेंसीज के प्रेजेंटेशन के लिए भी बनाया जा सकता है. इन केस देयर इज अ फंडिंग एजेंसी दैट कैन फंड, दैट कैन सपोर्ट अस फॉर आवर लाइब्रेरी ऑटोमेशन. सो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर अ बिड फॉर फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम्स. आपने लाइब्रेरी सिस्टम्स के जो सप्लायर्स हैं उनको एक बिड है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है जिसमें आपने स्टेप्स लिखने हैं कि राइटिंग RFP, इसके स्टेप्स हैं. अप्रूवल, आपने कोटेशन रिक्वेस्ट करनी है, आपने उसके बाद रिसीव करने हैं प्रपोजल्स जो आपके वेंडर्स के पास से आएंगे, उन प्रपोजल्स को इवैल्यूएशन करना है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करना है वेंडर्स को, आपको एक डेमो के लिए रिक्वेस्ट करना है वेंडर्स को, और डेमो के बाद आपने सिस्टम परचेज करना है. सिस्टम परचेज करने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना है. उसके बाद जो सिस्टम है आपका वो जब आपके पास डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है उस सिस्टम को, और उसके बाद जो इंस्टॉल कर लिया उसको इवैल्यूएट करना है. तो इसके लिए हमें हार्डवेयर की भी सिलेक्शन करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है. और हार्डवेयर की प्लानिंग में आपका क्या आएगा? आपका जो
जनरेशन है कौन सी है, आपका जो i10 है लेटेस्ट चल रहा है, तो आपका i10 ना हो तो कम से कम i7 या i5 ज़रूर हो। उसके अलावा इसकी जनरेशन जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो रैम है कम से कम 8 GB होनी चाहिए इन केस यू वांट इट टू बी अ server. For the server it should be at least 8 GB RAM. It should be 1 TB hard disk drive, or you can choose a 240 GB SSD. CD drive should be there, USB card or pin should be there, LCD, LED, TFT as per requirement or as per the needs, facilities it should be there. Internal modem, cables, these are the requirements in case of hardware. You need a scanner, you need a printer, barcode scanner is required, sensor system should be there, opaque kiosk can be there, telephone connection. These are the requirements in case of hardware. These should be planned accordingly. And in the case of software, we have to analyze and identify the library needs. What type of library needs do we have? Which type of software, which type of integrated library management system matches with these features, the requirements of the library, which type of ILMS is fulfilling. Is it can an open source ILMS can fulfill all these your requirements? Are you capable to handle that open source software? Or if you are not capable, then go for the proprietary software. Are you going to, you have to plan it accordingly, whether you can handle it, or if you can't handle it, or you don't have any IT section or any IT support to handle that ILMS, then we have to opt the services or the vendors who will manage the software for us. So we have to plan all this accordingly. There are various options available and we have to choose the best as per our library requirements. So this was all about planning. After the planning, how implementation goes on. What is implementation? Implementation is to implement all the activities which we have planned for our library automation. When it starts after your plan is approved and a decision is made by the management to automate the library services. To automate the library services and to make it operational, we have to design an implementation strategy which include allocating the resources, what to implementation for hardware, implementation for software. What is allocating resources? Allocating resources is the resources which include the hardware, network, data, staff, and all other various types of resources. The layout of the network must be designed. Do you need it on the LAN or the WAN? It must be designed accordingly. Identify each service point and put the necessary hardware in place. A server should be placed there, and if you need, then shared services like printing and scanning can be on the network. You can use the networking. So in case of hardware implementation, time to time checking of all the computer stations, checking of all the hardware accessories such as cables, power supply connections, printer, scanner, barcode reader, all the hardware. Checking of furniture and other machineries. Is everything okay? It should be implemented. And in case of software, determine the problems related with the software and remove them.
time to time testing and measurement of all the modules of the software, or means if all the modules are working, or are you using all the modules of the software. Improvement and changes in the library software. If there is any improvement is required or any change is required, then it is implemented accordingly. Data conversion of manual records to computer readable form. After you have implemented the hardware and the software, you have installed the ILMS. After that, the data conversion of manual records to computer readable form is done. Data conversion of computer record to computer readable form. Checking of formatting of bibliographic description of all types of documents, and the standardization of data according to international standards such as Mark 21 or Z39.50. All the international standards are followed. So after that, if any system maintenance is required, we have to take care of some things such as environmental care, like sunlight should not be directly on the systems. There should be a very well ventilated air. Water should not be there. Dust should not be there. And likewise, in the case of data security, we have to take care of the hackers, the viruses, and malicious insiders, and other type of such threats that can breach our data, that can hack our data. So we have to take care of the data security as well. We have to train the staff, and not only one time staff training is required. It should be, the library staff should be trained time to time. As the technology is advancing, we need more and more training. Likewise, the library user should also be trained to use for the best use of library automation. And of course, there are some challenges, like the lack of staff preparation for automation project. We don't plan and we don't implement it according to our plan. So there is a staff preparation for automation project. Data conversion, there is a big and very challenging task is to migrate your library data into the ILMS you are choosing. And lack of resources and expertise, of course, turn out to be more expensive. If you are not a tech savvy librarian, or if you are not a tech savvy library staff, then it turns to be more and more expensive for you. You have to be dependent on the vendors as well. And lack of administrative support. Yes, many a times due to financial crunches, due to financial budget constraints, we have to, or many a times for any other reasons, or the lack of interest from the authorities as well, we are facing very much challenges. So there are some key factors for successful implementation. First and foremost is support from administration. Staff should be competent enough to handle the library automation, and library user requirements should be considered. Infrastructure should be there, and data should be available. Excellent managerial skills from coordinator of the project, and it should be graphic user interface or user interface. This was all about library automation, need, purpose, planning and implementation. Thank you very much for a patience hearing. Please like, comment and share the video, and subscribe to the channel if you like the video. Thank you very much. Thanks a lot.